Hello students, welcome to this lecture on trigonometric ratios of allied angle. In this lecture we are going to study examples on allied angle. In last lecture we have studied what is the concept of allied angle and we have revised here. We are going to just revise what we have taught or learned in the last lecture here. We know that these are four quadrants. This is first quadrant. Okay, I will draw this diagram on this side so that I will solve example here. We have done two things in last lecture. Two things are here, it is a first quadrant, this is the second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. In these four quadrants, various trigonometric ratios give various values. Here all trigonometric ratios give us positive value. Here sine and cosec is positive. Here tan and cot is positive, isn't it? And here cos and sec only is positive and rest are negative. So this concept we have learned in the last lecture. One more concept is there. Here this measure is 90 degree. Okay, 90 degree minus if we do, it will lie in first quadrant. अगर plus करेंगे तो क्या होगा? 90 plus theta will lie in the second quadrant. Okay. Now 90 here it becomes 180. 90 plus 90 it gives you 180. Then 180 plus 90 it gives you 270, and afterwards 270 plus 90 it gives you 360. So this we have studied in the last lecture. One more thing is, if sine of n pi by 2 plus or minus theta is there, then if this n is even, then sine remains sine, cos remains cos, and tan remains tan. Means if this type of angle is there, n pi by 2 plus theta, plus or minus theta, then this happens if n is even here. And what happens if n is odd? If n is odd, then sine is converted into cos, cos is converted into sine, and tan is converted in cot. So this much we have studied in the last lecture. Now we are going to solve examples here. This example is given to us and we are going to find out or simplify its value. So I will start with first ratio, that is cos of 180 minus theta. Okay, so it is cos of, now 180 means 2 into 90 degree minus theta. Okay, so here what we are going to check here कि 90 का मल्टीपल क्या है, इवन है, तो cos का क्या होगा, cos theta होगा. Okay, but 2 into 90 degree minus theta means 180 minus theta. 180 यहाँ तक है, माइनस अगर किया तो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव है, साइन एंड सेक इज पॉजिटिव. कॉस क्या देगा, वैल्यू नेगेटिव देगा. सो इसके आंसर को कौन सी साइन आएगी, माइनस. ओके, नेक्स्ट आई विल स्टार्ट विद दिस हियर, और साइन ऑफ माइनस थीटा. आई विल solve this first. Sine of minus theta, we know that sine of negative angle is minus sine theta. Okay, then next one is cos of 270 plus theta. अभी यहाँ पर 270 is the 3 into 90 degree, so I will write in this way, cos of 3 into 90 degree plus theta. Now here 90 into 3, it is even or odd, it is an odd number, so this cos will be converted into sin theta. ये तो डिसाइड हो गया, लेकिन इसको साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा,
तो देखते हैं ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैसे भी क्या है, कॉस पॉजिटिव है, सो इट विल हैव पॉजिटिव वैल्यू। I will write here lies in fourth quadrant, therefore positive, and यहाँ पर क्या रीजन आएगा, lies in second quadrant, therefore negative we have taken. Okay, no need to write this in the exam here. Now next one is sine of 180 plus theta. Once again 2 into 90 degree plus theta is there, so sine remains sine, but here sine of 180 plus theta, 180 यहाँ तक है, प्लस किया तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में only tan is positive and cot is positive, and we are going to find out her sign. तो साइन को कौन सा साइन आएगी, माइनस। ओके, as it lies in which quadrant, it lies in third quadrant, and therefore it will have negative sign. Okay, so in this way we have found all the four values that were needed. Now we are going to just put these values in the equation 1. So if I put in the equation 1, give it equation number 1. Okay, so equation number 1 becomes cos of 180 minus theta, its value is minus cos theta, but इसका क्या है, स्क्वायर, देन डिवीजन में साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या आई है, माइनस साइन थीटा इनपुट। देन नेक्स्ट वन इज cos ऑफ 270 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू है साइन थीटा एंड इट्स क्या है, स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, इट्स वैल्यू इज गिवन एज माइनस साइन थीटा। Okay, so if we simplify all these terms, so minus sin theta is the common in both the denominator, so we can add here numerator minus of cos square theta, it will give us positive cos square theta plus sin square theta, and whole divided by sin theta with minus sin. Now we know that fundamental identity, cos square theta plus sin square theta, it gives you 1 upon minus sin theta, and we know that 1 upon sin theta is nothing but cosec theta. So in this way we have simplified all these four terms into only single term. In this way we can solve this example. These concepts you have to remember or take the logic from that and solve the example. Let's solve this question. Now in this example, three terms value we have to find out. So I will start here with sec of 135. Sec 135 degree. Now if I write sec of 90 plus 45, it gives you 135. So यहाँ पे करना क्या है, हमें try to convert this into 90s form. So 90 के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इस वजह से होगा. Now here 90 का मल्टीपल चेक करेंगे. पहले तो 90 का मल्टीपल क्या है, 1 है, means it is a odd number. So sec becomes cosec 45 degree, isn't it? ये तो हो गया, लेकिन इसको साइन कौन सी आएगी, sec of 90 plus 45. If we take 90 plus 45, it lies in, it goes in second quadrant, but in second quadrant only here it should be cosec. Only sine and cosec is positive, and sec will give us which value, negative. So इसके आंसर तो कौन सी साइन आएगी, माइनस की साइन. एंड cosec of 45 डिग्री टेबल में से अगर वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, इट इज वैल्यू, its value is √2. So in this way, next one is cos of minus 240 degree.
इट इज इक्वल्स टू, नाउ कॉस ऑफ माइनस 240, यहाँ पर एक फॉर्मूला है, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव कॉस थीटा है, सो इट विल गिव अस ओनली कॉस ऑफ 240. वंस अगेन हियर 240 90 के फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे करेंगे, कॉस ऑफ 270 माइनस 30. ओके, सो 270 माइनस 30 इट गिव्स यू 240 एंड ये 270 क्या है, 3 इंटू 90 डिग्री है, सो कॉस ऑफ 3 इंटू 90 डिग्री माइनस 30. ओके, नाउ हियर 90's multiple is odd, so cos becomes sin here, so I will write here sin of 30 degree. Okay, now we will check which sign will be the 270 minus theta. It lies in which quadrant, 270 minus theta lies in third quadrant, और third quadrant में cos क्या है, positive है, so it will give us positive value and its value is 1/2. And lastly, this is sin of 930. So sin of 930. Now to find out values of such large number, what we are going to do here, I will just write down in this way. Sin of, if I write 90 stable here, 90, 180, 270, 360, 450, then it is 540, 630, 720 and 810, 900. Now we know that these are the multiples of 90, so 1 into 90, this is 90 into 2, and if we do for this 10 into 90. So our angle here is 930. If we write 900 plus 30, will give us 930. So I will write in this way, 10 into 90 plus 30. Okay? तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको इसके लार्ज नंबर एंगल के वैल्यू फाइंड आउट करने हैं. सो इन दिस वे साइन ऑफ, नाउ हियर 10 is an even number, so sin remains sin of 30 degree. ओके, लेकिन इसको साइन कौन सा आएगा, अभी यहाँ पर 90 को कितने बार लिया है, 10 टाइम्स, सो आई विल ड्रॉ हियर वन डायग्राम. ओके, यहाँ पर 10 into 90 डिग्री मीन्स दिस इज 1 रेवोल्यूशन, 2, 3, 4, ये क्या होगा 4 टाइम्स 90 डिग्री. नाउ दिस इज 5 टाइम्स 90 डिग्री, 6 times 90 degree, 7, 8, 9 and 10. So यहाँ तक तो आ गए हम, लेकिन यहाँ पर एंगल प्लस किया है या माइनस किया है, प्लस किया है, मीन्स इट विल गो इन विच क्वाड्रेंट, इट विल गो इन थर्ड क्वाड्रेंट, मीन्स 10 into 90 degree plus 30, it goes in which quadrant, it goes in third quadrant, and in third quadrant sin will give us which value, minus. So I should have written here minus, and here I will write it lies in third quadrant and therefore it will have negative sign, and here it is minus 1/2. Now just put all the values, 3 values in the first equation. So it will give us sec square 135. I will just put in this equation here, sec square of 135 degree divided by cos of minus 240 minus 2 into sin of 930 degree is equals to, now its value is minus root 2 and its square divided by second value is 1/2 minus third value is 2 into minus 1/2. Okay, now minus 2 square is only 2 divided by 1/2, this 2 gets cancelled, minus minus it becomes plus, this is 2 divided by 3/2
Okay, and it is nothing but 2 into 2 by 3, and it will give us 4 by 3 value. In this way we can find out such type of complex example in the simpler form. Write down this. Now this question is, without using calculator, show that this term is equals to 1. Means in this example we have asked to find out its value without using calculator. So यहाँ पर करना क्या है कि if you observe all the angles 420, 390, -300 and -330 डिग्री, मीन्स यहाँ पर ये कोई ना कोई 90 का मल्टीपल आना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, आई विल राइट हियर 90 stable is 90, 180, it is 1 into 90, this is 2 into 90, then 270 is 3 into 90, in such way 360, 450. तो इस एग्जाम्पल में यहाँ तक हमें चाहिए, so I will write in this way. Okay, now we will start with this first ratio. First ratio is sine of 420. Now nearer to 420, which value is here? 450. So I can write this value as sine of 450 minus 30. ओके, तो एग्जाम्पल में ऐसे सेट किया है कि 90 माइनस ये एंगल जो हमें पता है, इसकी वैल्यू 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है. सो साइन ऑफ 5 इंटू ये क्या है, 5 इंटू 90 डिग्री माइनस 30, isn't it? 450 is nothing but 5 into 90. Now here साइन का जो ऑड, ये 90 का मल्टीपल है वो क्या है, ऑड नंबर है. सो साइन विल बिकम कॉस हियर. ये तो एक बात हो गई कि साइन का क्या हो गया, कॉस, बिकॉज 90 का मल्टीपल हमने चेक किया. बट यहाँ पर 5 into 90 डिग्री माइनस थीटा, इट लाइज इन विच क्वाड्रेंट, वी विल चेक. सपोज आई विल डू दिस 4 टाइम्स 90 यहाँ तक है एंड 5 टाइम्स माइनस थीटा, मीन्स इट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. So it will give us positive value, and cos 30 is nothing but √3 by 2. Then next value I will find cos of 390 degree is equals to cos of 360 plus 30 we can write. Okay, but 360 क्या है, 4 into 90 degree. So cos of 4 into 90 degree plus 30. Now here 90's multiple is even number, so cos will become cos of 30. Okay, and cos 30 is nothing but √3 by 2. Then और क्या आएगा यहाँ पर, साइन कौन सी आएगी, 4 into 90 डिग्री प्लस 30. तो यहाँ पर फिर से 4 into 90 डिग्री यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, और प्लस 30 अगर किया तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, वंस अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सो जैसे कंडीशन यहाँ पर है वैसे ही इट विल गिव अस पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ पर ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. नेक्स्ट वन इज cos of -300 डिग्री. इट इज नथिंग बट, अभी यहाँ पर cos का नेगेटिव एंगल है, सो इट विल गिव अस positive cos of 300 because we have formula. Which formula? Cos of minus theta is equal to plus cos theta. Now cos of 360 minus 60 I can write, isn't it? 300 को ऐसे लिख दिया. Then cos of 4 into 90 degree minus 60. Once again 90 का मल्टीपल 4 है, means cos will remain cos 60. 4 into 90 degree minus 60 lies in first quadrant, so it will give us positive value. And cos 60 की वैल्यू क्या है, हम टेबल में से लिख सकते हैं कि cos 60 की वैल्यू है 1/2. And last one is sin of -330 degree. Now here
we know that sine of minus theta will give us minus sine theta, means this minus sign will be written outside, minus sine of 330 degree. Here minus sine of 360 degree minus 30 I can write. I can write sine of 4 into 90 degree minus 30 degree. Now 90 का मल्टीपल यहाँ पर क्या है? It is an even number, so minus sine of that is equals to 30 only. And once again it lies in which quadrant? Fourth quadrant. लेकिन fourth quadrant में साइन एंगल क्या है? नेगेटिव है. So ये नेगेटिव ऑलरेडी था और इसका नेगेटिव, it will become sine of 30 and it will give us value is equals to 1/2. Now if we put all these values in this equation, I will rub this part. Okay, video pause करके आप लिख सकते हो. So if I put all these values in this equation, first value was root 3/2 into root 3/2 plus 1/2 into 1/2. Okay, तो चारों टर्म्स की वैल्यू अगर पुट कर दी है, root 3 into root 3 gives you 3/4 plus it gives you 1/4. Denominators are equal, so 3 plus 1/4. It is 4/4. It is equals to 1 and it is nothing but equals to RHS that we have asked to find out. Okay. So in this way we have studied all the example based on allied angle. Now if you like this video, please share, subscribe, and if you have any doubts regarding this topic, you can write in the comment section. Please subscribe to this channel and click that bell icon to get the notification. Thank you for listening.